कैसे हैं आप सभी? I hope that you are well. This is Saraswati. Welcome you on my YouTube channel, Spoken English by Saraswati. So, today in this lesson, we are going to learn about some interesting topic, some stunning topic. बहुत ही interesting topics, बहुत ही interesting questions जिसके आंसर आप सभी नहीं जानते होंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में. Before we go, first like and yes, if you are new on this channel, so please subscribe this channel. Okay, so चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेसन. So let's get started. Okay students, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो लेसन. यस, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. ऑलराइट, तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है. इस लेसन को स्किप करे बिना ही देखिएगा. क्या पता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखे बिना ही चले जाए, तो स्किप करे बिना ही देखिएगा. राइट, तो चलिए देखते हैं वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आप नहीं जानते. राइट, ओके, तो चलिए देखते हैं. तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ देख सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए. यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एजेस आर देयर इन इंग्लिश लिटरेचर. यस, ये सभी तो आप सभी जानते होंगे ना. क्या नहीं जानते? ओके, इट्स ओके, ऑलराइट. So, चले मैं आपको बताती हूँ. Okay, so these edges are, you can see here, these are the edges in the English literature. पहले तो ये है कि अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर, इट मीन्स अगर आप इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य को रीड करना चाहते हैं, जो इंग्लिश के एजेस है वो बहुत बहुत सारे हैं, उन्हें याद रखना है तो आपको एबीसीडी के फॉर्म में आपको याद रखना होगा. तो चले आज मैं आपको वो सिखाती हूँ. Here you can see these answers. फर्स्ट ऑफ ऑल ओ यानी कि द ऑल इंग्लिश पीरियड, यानी कि द एज ऑफ, या द ऑल इंग्लिश एज. राइट, या सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि एज ऑफ मिडिल इंग्लिश. राइट, यस. नेक्स्ट एज ऑफ रेनेसा. यस, एज ऑफ रेनेसा. नेक्स्ट ई, या डेफिनेटली Elizabethan age. Next J, which is the age called J? Yeah, the age of Jacobean. Right? Yeah. Next age है C. Yes, C it means age of Caroline. Age of Caroline. याद रखिए. Next age है P. P यानी yes, age of Puritan. R यानी romanticism. Romantic age of रोमांटिक. ऑलराइट, यस. अगला जो आर आया था वो रेनेसा का, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो रोमांटिक एज का. ओके, यस. सो दिस इज वी यानी यस, डेफिनेटली वी यानी एज ऑफ विक्टोरियन. नेक्स्ट एम यानी एज ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पीरियड. ओके, यस, एज ऑफ मॉडर्न. नेक्स्ट जो है वो पी यानी पोस्ट मॉडर्निज्म, एज ऑफ पोस्ट मॉडर्न. एंड लास्ट इज ऑल्सो एम यानी मिडिल इंग्लिश 20th सेंचुरी. राइट, लास्ट जो है वो मिडिल इंग्लिश, इट मीन्स मिड इंग्लिश 20th सेंचुरी एज. राइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से आप यहाँ देख सकते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन? यस, Who is mother of English literature? आपने father of English literature का नाम तो सुना होगा ना. Yes. So, who is the mother of English literature? Do you know? No. Okay. Let me answer you. Yes. So, mother of English literature is Frances Burney. Right? Yeah. So, this is the mother of English literature. She is famous for the fiction novels, right? It means she called as the mother of fiction. Okay, so that's why she called as mother of English literature. Right. Let's see our next question. Next question is this. You can see here. Yeah.
who is the father of English literature? Definitely you know, right? Yeah. So father of English literature, who is? If you know, so please comment me in the comment box. Okay. Yeah. So who is father of English literature? Yeah, definitely you know, right? No? Okay. So let me answer you. So here's the name. Who is? Yes, definitely Geoffrey Chaucer, who is one of the greatest writer, playwright, poet in the English literature. Also, he is one of the greatest poet in the age of Middle English, right? Yes, he is one of the most and one of the longest poet. One of the longest poem is this Canterbury Tales, and that's why he called as one of the greatest poet in the Middle English age, right? Yeah. So this is the answer of our question, right? Yeah. So let me see next question. Next question is this: who is the most famous and most greatest writer in English literature? Do you know? Alright, let's answer you. So this is the answer: William Shakespeare, who is the one of the famous writer in English literature, right? Yes, definitely, because he wrote so many dramas, so many poems. That's why he called one of the famous writer in the world. Okay, so William Shakespeare is one of the greatest dramatists in English literature. Okay, so this is our answer of the question. So next question is this: what is the next question? Yeah, you can see here what is the best book ever written, right? अब तक की सबसे अच्छी किताब कौन सी है? Okay, so do you know about this in English literature? Which is the best book ever written? नहीं ना? Okay, तो चलिए मैं बताती हूँ. वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी नॉवेल्स है, बहुत सारे ऐसे ड्रामास वर्क्स है, बट यहाँ वन ऑफ द बेस्ट बुक की बात की है तो बेस्ट बुक ये सारे हैं. आप यहाँ आंसर देख सकते हैं. A Passage to India. A Passage to India. This is the one of the best book which is ever written. Next is this Don Quixote, and third is Anna Karenina. This is the best book for ever written. So these are the answer of this question. Next question is this. You can see here, and this question is so interesting. What is the most readable book in the world? Do you know? Alright, the Bible. Yeah, the Bible, which is most readable book in the world. Okay, so this is the answer of this question. Yes. Next, one of the most stunning question: what is the hardest word to say? Right? Okay, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो बोलने में दिक्कत आती है? राइट? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू कैन सी हियर. यस. सो फर्स्ट इज दिस rural, right? Hardest to say. Rural, right? And next is this Gologist, right? This is the hardest word to say. Squirrel. Okay, so this is the hardest word to say. You pronounce yourself. Squirrel, rural, etc. Right? So these are the hardest words. Okay, so let's see next question. Next question is this: what word takes 3 hours to say? Okay, so what word you know? Okay, alright, I answered this question. So you can see here, I can pronounce very well of this question answer. You can see here and answer yourself. Okay, so alright, but let me try to आंसर यू. राइट? सो मैंने यहाँ लिख दिया है जैसे कि जो वर्ड है बहुत ही हार्ड है बोलने में, तो वो वर्ड जो है, वैसे तो देखा जाए ये एक केमिकल का नाम है. केमिकल जिसे शॉर्ट फॉर्म में कनेक्टिंग के नाम से जाना जाता है. कनेक्टिंग. ओके, कनेक्टिंग टाइटन. राइट? और इस केमिकल का नाम एक ही वर्ड में है, और ये वर्ड जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं कितने लेटर्स में लिखा गया है ये वर्ड. राइट? 189,819.
सो ये जो केमिकल का नाम है वो लिखा गया है एक ही वर्ड में. वन ऑफ द स्टनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. ओके, our next question is this: which is the oldest language in the world? So the oldest language in the world is Tamil language, right? Tamil language is the one of the oldest language, ancient language of the world. Okay, so our last stunning and interesting question is this: who is the first poet in the English literature? Who is? Okay, so you can see here the answer. Answer is Bede. Bede, who is the first poet? Who is the first poet in the English literature, and he is most famous for his first poem, the Hymns. Okay, the Hymns. This is his first poem, and he wrote this at the first time in the English literature. Bede is known as the Cadman. Okay, you know about this now? Yeah. So his name is Bede, but famous for this name Cadman, right? So Cadman is the first poet in the English literature, alright, and he is best known for his poem the Hymns, right? So these are the stunning and interesting and one of the finest questions in the English literature, and I think you like this question, and I think these questions are helpful to you in your study. Okay, तो चलिए आज हम ये लेसन ये फिनिश करते हैं. आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप सभी को ये क्वेश्चंस जो है वो हेल्पफुल बनेंगे. तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और हाँ, पसंद आया है तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. एंड यस, आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए, आज हम ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलेंगे. टिल देन बाय, हैव अ गुड डे. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.